Hello everyone, today I'm back with another exciting recipe. Let's make some delicious egg rolls. You can make them for breakfast, brunch, or even as a party snack. So, first talking about the ingredients, I'm taking the very basic ingredients again. I'm taking capsicum, onions, tomatoes, some green chilies, mushrooms, garlic, and some carrots. I'm gonna be using eggs. I'm taking around 3 eggs here. I'll show you how to use the eggs and what all else do we need to put as we make it. So to start with, I'm gonna first make the filling for the omelette. Taking around 1 teaspoon of rice bran oil. You can take any other oil. We will add our garlic and chilies. This is just to give some flavor in the oil. We don't want to burn them. After this, I'm gonna add the onions. बस onions को हल्का सा translucent करना है. Again, we don't want to burn the onions as well or caramelize it. We're gonna add our mushrooms and our carrots first. इसमें जितनी भी ingredients हैं, these are optional based on the availability or your choice. If you do not prefer to eat mushrooms, you don't like it, your kids don't like it, you don't need to put them there. मशरूम से बस थोड़ा एक वॉल्यूम आता है फिलिंग में, इसका अपना कुछ ऐसा फ्लेवर नहीं होता. The key is to use at least 5 ingredients in the filling. Now we'll add our tomatoes. इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे. To add bit more flavor to it, मैं इसमें धनिया पाउडर डालूँगा, लगभग 1/4 टीस्पून. हम इसमें ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डालेंगे बिकॉज वेजिटेबल्स का अपने फ्लेवर्स हैं, उसको बाहर लेके आना है और उसी से ही फिलिंग काफ़ी रिच लगने लगेगी. Now we'll add our capsicum. A quick tip, I am making all of this on very low flame. I'm not making it on medium or high. So the best way to know कि you have the right temperature is you can see that the vegetables are not burning. They are just cooking. नहीं तो they would have started turning brownish by this time if it was on medium flame or a bit higher flame. अब इसमें बस a dash of water. If you love non-veg and you have salami, you can add cooked salami at this point. उसमें ये सारे फ्लेवर्स उसके ऊपर आ जाएंगे एंड इट विल टेस्ट रियली गुड. अभी आप देख सकते हो इसमें काफ़ी पानी है, मेरे से ज़्यादा पानी डल गया जितना मैं सोचा था उससे ज़्यादा. तो इन दैट केस थोड़ा सा फ्लेम बढ़ा दें फॉर 15-20 seconds एंड देन ब्रिंग इट बैक टू लो. यू कैन सी जो एक्स्ट्रा पानी दिख रहा था वो evaporate हो गया. So the filling is almost ready. Looks something like this. It's very basic. देखने में maybe it is not that appetizing at this point, but trust me, once we make it into an omelette and use this as the filling, its taste would come out. For the omelette, we don't have to do anything special. It's just few eggs, some ingredients. If you've watched the video so far, please don't forget to like the video and subscribe to my channel. Do hit the bell icon to stay posted on my new videos. इसमें डालेंगे salt, a pinch of it, crushed peppers, थोड़ा सा oregano, chili flakes. हम इसमें हम डालेंगे half cup of water.
और थोड़ी सी फ्रेश क्रीम या मलाई। आप लोग सोच रहे होंगे कि पानी क्यों डाल दिया, इससे तो बहुत बैटर पतला हो जाएगा। तो ट्रिक यही है, हमें बैटर को पतला ही करना है। आपके पास मलाई नहीं है तो आप क्वार्टर कप पानी और क्वार्टर कप दूध डाल सकते हो। सो इट्स टाइम टू कप। तो जब हम इसे घुमाते हैं तो इसके ऊपर लेयर्स बनती जाती हैं। तो आप जब साइड में उसे घुमा रहे हो तो आप देखोगे कि एक बार, दो बार, तीन बार घुमाने के बाद उसे रख दो और फिर से दोबारा से 5 सेकंड बाद फिर करो। उससे क्या होता है कि जो लेयर चिपकी हुई है वो कुक होती है और उसके ऊपर जो आप करते हो तो नेक्स्ट लेयर और बनती जाती है, तो उससे थोड़ा सा स्मूथ टेक्सचर आ जाता है। We'll cover it with a lid and cook it for a minute. Like always, I started my recipes without any final dish in mind. In this one too, I thought of trying to make some thin omelets, almost like crepes or thin pancakes. Oh, this reminds me, talking about pancakes, if you want to know how to make a quick 3-ingredient healthy pancake, click on the link on the top right corner of your screen now. Check कर लेते हैं। इसको पलट देते हैं। आप देख सकते हो बहुत थिन है। अभी इसकी फिलिंग कैसे करनी है मैं अभी आपको दिखाऊंगा। I'm going to add cheese to it. इस एज को पूरा ऊपर उठा के यहाँ तक लेके जाएं और यहाँ से पीछे पुल कर लें, रोल। इस तरह से आपका रोल जो है थोड़ा टाइट बनता है एंड इट डजंट फॉल ऑफ सो इजीली। लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स। इफ़ यू डू नॉट लाइक चीज़, आप इसको एज सच फिलिंग भर सकते हो। Now we'll do the same trick again. Take it all the way to the other half and put the fingers in the middle and pull it back till the point you feel that it is firm, and then just roll. So here it is, the egg roll with cheese, without cheese. You be the judge. You can have it with mint chutney, ketchup or mustard sauce. But I would recommend try having it as such because the flavors of the vegetables, stuffing and the eggs make it really, really delicious. Oh, wait. I forgot about the bonus recipe. So you've already made this thin omelette. And what you can do is just start rolling it जैसे पेपर को रोल करते हैं। This is the egg noodles that you can have anytime. Please don't forget to like this video and share it with your friends and family. Do subscribe to my channel for more lip smacking recipes. Have a great day.